श्रीपादसप्तति श्लोकास् 51 to 60. देव्या पङ्कजयोऽद्य महिष चड्मा महान् कण्टकः पादेनाहत इत्युदूढहसितं सख्या समावेदिते सद्यः कण्टकशालिना करतले नासाद्यपादाम्बुजं गृह्णान्नार्तिविनोदनाय गिरिशो जीयात्प्रियस्ते शिवे त्वत्पादाङ्गुलिपल्लवैरगसुते देवि स्वयं पञ्चभिः पञ्चत्वं गमितो महासुर इति स्वात्मानुरूपं कृतम् एतैरेव नतो जनस्त्रिदशतां नीतो महेश पुनर्लक्षत्वं गमित प्रसूनधनुषो विस्मापनं तद्वयम् ब्राह्मं मागवनं च वाहनमहो मन्दैर्गतैर्निन्दितं दावल्येन न कत्विषां विहसितो वाहोऽपि माहेश्वरः इत्थं वाहनवैरितां भजति ते पादस्ततो मन्महे कात्यायन्यमुनान्यगानि महिषः कार्तान्तवाहभ्रमात् सीमन्तप्रकरे सुरेन्द्रसुदृशां सिन्दूररेखात्मना माणिक्यद्युतिसंकैवमकुटी कोटिषु दैत्यद्रुहां शम्भोर्मूर्ध्नि जटाघटारुणरुचि व्याजेन पादप्रभै वैकाते परिणाममेति करुणां मूर्ते गिरीन्द्रात्मजे नोकेश परमाश्रय सुमनसां पादाब्जरेणुश्च ते नो मन्दारसिता परं स्मितरुचिर्मञ्जीरयोश्च द्वये नो बाहुः कलहं समेत्य जयति त्वद्ध्यानलीलाप्यसौ नो शुम्भत्तरलाक्षमाननमिदं पादाम्बुजं चाम्बिके नाते तावकवाहसिंहचकिता त्वत्पादमूलेन ता नूनं बभ्रमुरभ्रमुप्रियमुखात् इक्कुम्भिवीराश्चिरम् नो चेदेश कथं तदुन्नतशिरस् सिन्दूरसन्दोहजो रागस्ते चरणाम्बुजे परिणमन् अद्यापि विद्योतते पादोऽयमजाश्रितश्च रुचिर स्पर्शान्वितो योगिनाम् अन्तस्ताकृतिरूष्मभाक् च महिष प्रध्वंसनप्रक्रमे एवं कल्वकिलाक्षरात्मकममुं शैलेन्द्रकन्ये कथं भाषन्ते न तवर्गबन्धुमपवर्ग आलम्बनं वा जनाः उन्मीलन्नकमण्डली हिमकणः शोणप्रभागैरिकं बिभ्राणपरिशोभमानकटको भूयो वनैकाश्रयः गायत्सिद्धवधूनिषेविततलः
पादस्त्वदीय शिवे राजत्येष हिमाद्रिपादवदिदं युक्तं हिमाद्रे सुते दिक्पालैर्दशभिः पृथगयं त्वत्पादयोरर्पितो दृश्यो भक्त्यनुराग एव दशदा शोणाङ्गुली श्रीमिषात् पादाभ्यामपि तान् प्रति प्रकटिता नूनं प्रसादाङ्कुरा दृश्यन्ते नखकान्तिपङ्क्तिदशक व्याजेन शैलात्मजे मेघानां कुलिशस्य च प्रतिहता दाराक्रमन्तां चिरं नो नश्येन्मददानवारि विभवो नाकस्य नागस्य च पुत्रोऽयं मम सैनिकाश्च ददतां नित्यं जयन्तः सुखं त्वत्पादाम्बुजपातिनः सुरपतेर्इत्थं जयत्यर्थनः श्रीमात्रे नमः।